Good morning, everyone. Good morning. Good morning. कोई भी डाउट से पूछ लो. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Varun. Good morning, Sudesh. Good morning, Rakesh. How are you? Long time. Good morning, Shrikant. Please explain how to identify LG points. Sure, Rakesh. I will. Good morning, Shreyas. Good morning, Nitesh. Good morning, LG. Great. So let's start. फर्स्ट थिंग ऑफ एक्शन प्लान कल के दिन में मॉर्निंग में क्लियर कट हमने बोला था एलजी पॉइंट्स इंटैक्ट लेवल कवर होने दो, उसके बाद ही लॉन्ग में ऐड ऑन करेंगे. सो सेम पोजीशन के साथ अलोकेशन मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में जो शॉर्ट के लिए एग्जीक्यूशन दिया था वही एग्जीक्यूशन के साथ मार्केट ने फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन एलजी कंप्लीशन के बाद, राइट. सो उसी पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ कंटिन्यूटी में मार्केट ने रिजेक्शन लेके एस टू बी वन सेटअप के साथ डेवलपमेंट दिखाई थी. So post completion of that development, what are the next things that you have to keep in mind? Let's look into today's scenario.
सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हाई वॉल्यूम देखना है. So with the high volume, what are the first major things that needs to be taken under the consideration? New York session का high volume rejection point to Asian session का high volume point, right? So जैसे कि long trade of execution development यहाँ पे हुई थी at this point of action, exactly market ने rejection लेके यहाँ से LG point से development दिखाया था. कहाँ तक movement develop हुई थी? 200% of the supply जो कि completion of the trade. So post completion of the trade, market had created a structural break of an intact. So this was the intact point of that movement in 1 hour. So market development में आके 15 minutes में POI generate करके New York PM session में drop दिखाया था, correct? In this point of action, this one. So with this drop, what are the few major things that needs to be taken under the consideration? Right? Drop तो आया. TTS 2.0 है, swing high, swing low, retracement allot करो. Exactly market is rejecting from intermediate ratio 200%. Right? उसके साथ Asian session में high volume develop कहाँ पे हुई थी? In this candle post iceberg zone. Right? So development तो यहाँ पे ही दिखाया था. But नीचे क्यों आया? Because always it comes down to the nearest rejection point, then take the rejection and continue in the movement. So जैसे ही वो development में आया, we have to look for an execution perspectives of the setup. The setup had been created in pursuance of the allocation, right? उस allocation के perspective में 1 hour का analysis कर रहे हो तो 1 hour का point of interest ये development होती है. With this development, restabilized movement को allot, right? जो कि ये वाला है. So with this action plan, what are the next major things that needs to be taken under the consideration? Coming to 15 minutes. Right? In 15 minutes, what is market creating? Market POI range से break दिया था, break के साथ high volume development है, but market ने nearest point of action पे rejection लेके continuity development दिखाया था, right? तो इस point of action में what are the few major things that needs to be taken under the consideration? Previous POI range जो है, वही previous POI range के साथ ही trade of execution को map out होना चाहिए, not prior to that, right? So with that 100% continuity में दिखाता है, then only the next execution will be taken under the consideration, not prior to that. Okay. So at this point of action, what are the few major things that needs to be kept in mind? What is your screening indicating? Screening क्या indicate कर रहा है? जो previous action plan है, उसी action plan के हिसाब से ही trade of execution develop होगा, not prior to that. Am I clear? So at this current stage, what are the few major things that you have to be looking at? So direction bullish है, volume indication दे चुकी है, right? Rejection is from intermediate ratio. Setup formation जो exactly intact से no development पे execution नहीं देखा है, 3 wing से no execution देखा है, वो लोग SUB1 का formation का wait कर लो and execute the trade in the plan, right? With this plan of action, what are the next things that needs to be kept? कहाँ तक trade hold कर सकता है? So reason of executions is always in pursuant of to the previous. जो भी allocating point develop होती है, उसी allocating point के साथ allotments आना चाहिए, not prior to that. Am I clear over here? So this is the screening for today. So at the Asian session, currently market is bullish, right? So आते हैं राकेश की LG points, right? How do you allocate an LG point structure? जब भी एक candle bearish movement में ऊपर के लिए wick नहीं create किया है. Example, this is the candle. Continuity में हर एक candle के साथ wick है, right? But allocation perspective के हिसाब से उसके higher point of action में क्या दिखता है हमें? एक regiment, right? So regiment में जहाँ पे भी wick create नहीं होती है, market definitely वापस आती है and then redevelop the structure. Same scenario अगर bullish movement में है, wick नीचे से नहीं develop होकर रहता है, there will be no wick on the candle from the bottom of it. So जब भी movement हर एक candle wick के साथ जाती है ऊपर के लिए,
Market retraces till the LG point, creates the wick of this candle, then form a setup. With this formation of the setup, execution. Okay, Rakesh. Hope it's cleared. Good morning, Nitesh. How are you? What is the significance of breaking of intact level? What does it indicate? It indicates a movement action plan which is in development where the pursuance gets into the play. मतलब अगर इंटैक्ट लेवल है उसके साथ हाई वॉल्यूम है डेफिनेटली मार्केट could not sustain at the point. If it's in the iceberg zone and if has an intact level and in pursuance continuity में movement develop होना है तो market could tend to allocate the structure in pursuance of the point of interest to the nearest intact and continue the movement. Your daughter is completion of minimality depends on the volume. No, the completion of minimality depends on the volume is not inappropriate till the time it's in the directional allocation form. आइसबर्ग जोन में है मिनिमलिटी फॉर्म हुआ है टारगेट पूरा कंप्लीट होने तक होल्ड करो प्रॉब्लम नहीं है अगर मिनिमलिटी फॉर्म हुआ है एंड उसी पॉइंट ऑफ एक्शन पे यू हैव अ हाई वॉल्यूम द नियरेस्ट रिजेक्शन पॉइंट के साथ वो रिवर्स हो जाएगा राइट सर नॉट एक्सपेक्टेड डॉट थैंक्स तुम हमेशा यही बोलते हो
सर मेरा कल का क्वेश्चन पेंडिंग है अभी. व्हाट इज रीडेवलपमेंट स्ट्रक्चर, हाउ टू लुक लाइक? कैन यू प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑन चार्ट? डेफिनेटली दूंगा. एट अ राइट पॉइंट राइट टाइम your answer will be your question will be answered. Sir, next target 4191. Sir, can you give 12G point example on the current chart, please? Definitely. Zoom कर लो chart, राकेश. आइडेंटिफिकेशन आप लोग गलत कहाँ पे करते हो पता है? आप सिर्फ ये मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? आप वॉल्यूम छोड़ दिए हवा में, राइट? उसके साथ वॉल्यूम के साथ नियरेस्ट रिजेक्शन पॉइंट छोड़ दिए हवा में, राइट? पीओआई रेंज सेटअप फॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन छोड़ दिया हवा में, राइट? सो आप एक चीज पकड़ते हो तो एक चीज छोड़ देते हो, सो वो नहीं करना है गलतियां यहाँ पे. ऑलवेज रिमेम्बर दैट सबको साथ में लेके चलना है. प्लीज मार्क द सेटअप ऑन चार्ट. 1 2 3 पीओआई रेंज 3 पार्टनर चाहिए. पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, and it should be matching with the previous POI. Partner 1, partner 2, partner 3. Box. हाँ.
सर करंट कैंडल में एलजी है, करेक्ट। नो डाउट ऑन दैट। Preserve the moment action plan. Allocate the structure in basis of that. सॉरी टारगेट्स नहीं देता, सप्लाई एंड डिमांड अलॉट करो, जो टारगेट आएगा टीटीएस 2.0 के हिसाब से, दैट विल बी द फर्स्ट अलोकेटिंग पॉइंट। ओके, हिंट चाहिए तो डेली टाइम फ्रेम का इंटैक्ट पॉइंट। Candle closing in next 15 minutes. सर 85,754 से लॉन्ग में हूँ, 91,000 पे चल रहा है। नेक्स्ट एड ऑन कहाँ भी होगा? 1 आवर का डिमांड अलॉट करो, स्ट्रक्चर बेसिस के साथ एमटीएसएल को 86,215 पे रखो एंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ एक्शन पे बने रहो। जब तक त्रिशूल फॉर्म नहीं होती है, रिट्रेसमेंट अलोकेशन नहीं होगा, तो डायरेक्शन में रहना। क्लियर? फोर 4162.646 तक टारगेट्स लेके चल रहे हो, वो आप डालो ना डिमांड, सॉरी सप्लाई। रिजर्व होना चाहिए उतना ही मूवमेंट। ये 12 मिनट में जहां पे मार्केट है वहां पे सस्टेन होके नेक्स्ट कैंडल विक क्रिएट करके जाएगा, तभी ही मैं इंटरेस्टेड रहूंगा होल्डिंग में डालने के लिए, उससे पहले नहीं। यस, 12 मिनट सस्टेन होने दो, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो 1 आवर का है उसमें विक क्रिएशन बहुत जरूरी है। तब तक के लिए एमटीएसएल स्ट्रॉन्ग रख लो, राइट? अगर डायरेक्शन प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूशन पे चल रहा है, so what is the next plan that you will be looking for over here is system trailing in profits.
स्ट्रीम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, जो भी डाउट है पूछ लो. सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हो क्या? सर मेरा सेंसेक्स अकाउंट बंद हो गया है सर, न्यू ब्रोकर सजेस्ट. न्यू ब्रोकर हमने चेक ही नहीं किया है, बिकॉज वी यूज आईजी एंड एक्सनेस. सो नया ब्रोकर चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा. श्रेयस ठीक है. एक्सनेस कैसे बंद हुआ आपका? डिपॉजिट्स करेंसी में बंद हुआ होगा ना. क्रिप्टो में तो आप डिपॉजिट अभी भी कर ही सकते हो. Aren't you tied up with any brokers? मेरे को ट्रेडिंग से बहुत पैसा आता है. So yes, I don't need to promote anyone. हाँ बट डेफिनेटली जिनके पास नहीं है उनको रेकमेंड कर दूंगा. उसके लिए चेक करना पड़ेगा ना पहले. हंट नहीं हुआ है अभी भी. हंट होने दो एलजी को. एंड फॉलो थ्रू में ये कैंडल मेरे को ग्रीन में क्लोज चाहिए. सर आईजी ब्रोकर इज लीगल इन इंडिया. सर आईजी ब्रोकर में आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कैपिटल 50 करोड़ प्लस नहीं हो. आईजी हंट हो चुकी है. Sir, how do you trade? Like when do you wake up? How do you keep the attention on the charts? How do I change my lifestyle in accordance with trading? अरे it's very simple. कितने बजे भी उठ रहे हो? So try to change it to sleep early, get up early routine, right? So with that perseverance, try to get up by 4 o'clock. 4 o'clock to 4:30 will be your meditation time. 4:30 to 5 will be the execution of reading books
5 to 6, 6:30 will be your workout time, right? Then you come, take shower, analyze the charts, have your breakfast, wait for the setup creations, analyze the markets, whichever scripts you work on. Just don't observe the charts, read the book while there is no setup or till the direction isn't completed, right? Do the back testing if the market is in consolidation, right? Be in the follow through action plans. Sleep by 10:30, Lalna. This is for everyone, right? To become a new person, first step, idea of implementation. Second step, executing the implementation. So idea of implementation take 3 days, right? Post you think. Execution takes 21 days to change a character. Then comes implementation. Implementation takes 6 months to become an habit. Then comes the last but not the least step, segregation. Segregation comes into the play when you habit the same thing for 1 year. That's the new you, which no one could recognize who you were. So segregation के लिए आना है. The first idea, execution, implementation, then segregation. LG grab done took an add-on. भाई 2 मिनट में नया कैंडल आने वाला है. वही नहीं हरी. ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट है क्या? ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट है क्या? आज तक स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया नहीं है, तो पता नहीं. So our major focus is always on this training. Daily 4 hours, 1 hour and 15 minutes. Depending on the intact minimality, mathematical calculations, we be in the directions. Let's talk in perspective of your market structure. Okay? आपका support यहाँ पे है, आपका resistance यहाँ पे है, right? ब्रेक हुआ, सस्टेन हुआ, आपने लॉन्ग किया, एसएल हंट, राइट? ओके चलो, एसएल रुक गया, वेट करता है. मार्केट ने ब्रेक किया, लास्ट टाइम आपने एसएल दिया था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? वेट करोगे स्ट्रक्चर बिल्ड होने का. चलो, स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, फिर से ब्रेक दिया,
एग्जीक्यूशन इस कैंडल पे करो, राइट? ऐसे यहाँ पे रखोगे। मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ओके चलो सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे तो चेंज हो ही गया, ऑन दिस रेड कैंडल कंफर्मेशन आपको आ जाएगा, राइट? तो इस कंफर्मेशन के साथ आपने फिर से शॉर्ट में ही बने रहोगे, नेक्स्ट कैंडल एक बड़ा सा ग्रीन क्रिएट करेगा एंड आउट। सो व्हाट्स द प्रिसिशंस ऑन द अलोकेशन? अगर 10 आप मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड की अलोकेशन देख रहे हो, कितना सक्सेसफुल है कभी देखा है? अगर इफ इट सक्सेसफुल मोर देन 8, implement it, no doubt. If it's not successful, then 8 trades in a 10 trades out of 10, then leave that. That's not for you. So here 3 ring setup has created, but there is no intact first candle intact. I am waiting for the intact the 3 ring right sir. हाँ श्रीकांत, आप बिगनर ट्रेड फॉलो कर रहे हो ना, तो सेम चीज, सेटअप क्रिएट होने तक आप ट्रेड नहीं लोगे। फॉलो द रूल्स what you have learned from LTD. And keep it up on the good job of closing more than 100 pips continuously on a streak of 5 trades. No FOMO execution. Wait for the setup. Setup is created, execute. सर इस कैंडल में भी एलजी क्रिएट हुआ है, अंबिका शांत हो जाओ, 1 आवर का नया कैंडल। Shreyas, this is your 4th time asking the same question. Every session I can't give you the same explanation. सर आपके सिस्टम फॉलो करके फुल टाइम ट्रेडर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स है, 6 months of savings, 3 months of capital deployment, 2 months of emergency fund, इतना सब है तभी कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है श्रेयस? नो डोंट बी सॉरी यार, सुबह सुबह सॉरी किसी को मत बोलो, जस्ट डोंट रिपीट इट अगेन, ओके? That's my job to say. That's it.
श्रीकांत, अगर स्ट्रीम पे हो ना, तो एक चीज, योर MTSL मैपिंग इज वे टू रॉन्ग, राइट? आपने कल शॉर्ट के लिए S2B1 के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? यू नो योर टारगेट इज ओवर हियर, राइट? 200 पिप्स की मूवमेंट दिखाया है मार्केट ने, राइट? तो आपका MTSL पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? 150 पिप्स में MTSL होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर से S2B1 फॉर्म हुआ है। ओके, सिस्टम ट्रेलिंग आपका 80 पिप्स 100 पिप्स पे होना चाहिए, जो आपने MTSL रखा था वो गलत है। सो सिस्टम ट्रेलिंग विल बी एट 80 to 100 pips. Your MTSL will be at 150 pips. Okay, so don't repeat the same mistake again. Confusions are there, that's totally fine, but you have two more chances of not repeating the same mistake. So first mistake में ही implement कर लें. Excuse me, guys. Any other doubts? Stream will be there for next 10 minutes. बैंक एक्स में ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, कुछ भी. Okay, execution perfectly. Just make sure that going forward, the MTSL should be followed through a position where it is on your high profit range, right? 100 pips में system trading लगाओ, TSL, no problems. MTSL should be only up and above of 200 pips. अगर 200 pips का movement है, तो 50 पिप के range में होना चाहिए, 40 to 50 pips. Follow that rule because you're following ID trades as of now. So जब तक स्विंग में कन्वर्जन में नहीं आओगे, तब तक बड़ा MTSL प्लान आउट मत करना, ठीक है?
पूरे मजे में आने का। चलो यार, उसके लिए आज सेंसेक्स देख ही लेते हैं। बैंक एक्स नहीं करने वाला हूँ, सेंसेक्स चाहिए तो दे दूंगा। ठीक है। रुक जा, इंडेक्स का। मंथली एक्सपायरी, मंथली यही करते रहो तुम। थैंक यू सर। मैपिंग तो खत्म होने दो, रुक जा। ओके, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में प्लान डेवलप होती है तो नॉट प्रायर टू दैट। Sir, I'm still struggling to perfect the execution. Sometimes I'm a bit early, sometimes I'm a bit late, sometimes I miss it completely. How do I master it? Shanti se, waiting patientfully. If you miss the trade, that's totally fine. You will get 5 to 6 trades a day. So never hurry on executions. Bit early, bit late is totally fine because learning stage में हो, मिस हो रहा है तो भी चलेगा, आई एम ओके विद दैट, बट फोमो में आके एग्जीक्यूट मत करना, राइट? सो एग्जीक्यूट करते करते सीखते सीखते यू विल गेट अ राइट एक्शन प्लान टू एग्जीक्यूट। ओके, सो पेशेंस एंड waiting to execute at the right point is the few things what I could recommend.
Okay, आ रहा LG add-on running with 60 pips. रुक जा, तो 60 pips negative 10 pips में लाएगा बहुत जल्द. Very good afternoon, Peter. How are you? It is raining here in Australia, so I'm unable to watch a little longer today. I've never seen anyone in 23 years mark up their chart like you. This is so good to watch. Thank you so much, Peter. नहीं नहीं, और 20 पिप्स गिरेगा तब उसका रेड में आएगा ना, उससे पहले थोड़ी आएगा रेड में. गुड मॉर्निंग समान. 42 470 472. What's the next number? This is the second day. Sorry, third day. तेरा second trade लाल में close करवा है. Nice. But overall green में, so good. कंट्रोल कर ले वरुण. 3 बार हो चुका है. Don't repeat the same mistake once more. ऐसे लेट नहीं हुआ. 10 पिप्स लाल में आके जाएगा वो, क्योंकि एलजी क्रिएटेड है उसके लिए, वरना नहीं होगी. वन आवर इंटैक्ट हो चुके हैं. यस, 1 आवर इंटैक्ट हो चुके हैं. सो नीचे इसके लिए आया क्योंकि एलजी क्रिएटेड है, विक नहीं था उस कैंडल. फॉर्मुलेशन प्रोसेस वेरी सिंपल. 4162 तक होल्डिंग पे रख लेना ट्रेड्स को, राइट. अगर ब्रेक एंड कंटिन्यू में सस्टेन होती है, सरप्लस फॉर्म होती है, then surplus 100% will be your TP1. At the current stage, we have a plotting for
TTS 2.0 plot कर लेना 42, 54 and 48%. You will get the allocations. So all the new members, whatever strategy, whatever rules, whatever allocations that you are following, make sure you do 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis. Come with the small capital, compound the capital. While compounding the capital, just make sure to protect it with proper risk to reward. Remove FGF, which is fear, FOMO, and greed from your life if you want to sustain in this business. Build the capital by compounding it because it's your hard earned money. Protect it. Do it with your analysis, with your execution, with your mindset, and with your psychology, and build the wealth what you're looking for. Right? Without setup, no executions, no FOMO, ruin the money by giving it to manhandling the accounts or following the tips of others. Learn by yourself, then you earn by yourself. That's the only mantra in this business. This is Nitesh signing off. Happy weekend everyone. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. Bye bye.